Bismillahirrahmanirrahim. Now, आज we are going to discuss the anemias which come under the category of inheritance. और इसके अंदर there are several important anemias, or these are some things which you will find. उनमें से भी ये है कि some are going to be more common than the others. अब in this group, what you are going to see, there are three important anemias. There is the hereditary spherocytosis, sickle cell disease, and thalassemias. Now, in these three categories, thalassemia is something which is very, very common, or where Pakistan is concerned, idhar aapko thalassemia, you will find a lot of cases of thalassemia. Now, as you are getting well versed with blood and all these anemias, now you will appreciate when I tell you why serum iron and serum ferritin, their levels are so important. Because now if you look at these diseases, okay, all of these are anemias, they are going to technically present to you with the, I mean, generalized sign symptoms are going to be the same, because anemia के वही sign symptoms हैं. Obviously, with different anemias and depending at which stage they are, their relevant sign symptoms might also be present. But generally, if you look at them, the main thing, the first thing that that's going to come across to you, that is going to be the sign symptoms of anemia. That person is pale, sunken eyes, things like that, palpitations, headaches. And so to differentiate, now you know how important these lab investigations become, and how important it is that we do not start subscribing iron or iron containing medication to these patients unless and until we diagnose what sort of an anemia person has. और थैलेसीमियास पाकिस्तान में we have a lot of cases, and इतनी सारी बनी हुई है, फातमी जैसी organizations which have been there for years and years. Still now more and more organizations are coming up जो कि which are technically purely dealing with these thalassemic patients. So this is one of, and again thalassemia is one of those conditions where you do not give iron, and anemia is something which is very, very prevalent in this condition. So you have to be very, very careful where this is concerned. अब लेट्स लुक एट हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस. स्फेरोसाइटोसिस, स्फेयर का मतलब राउंड, उसका मतलब है जो आरबीसीज हैं वो अपनी नॉर्मल शेप छोड़ के दे बिकम राउंड. नॉर्मल शेप क्या होती है आरबीसी की? कनकेव. ओके, थोड़ा सा इसको गिव जरा प्रिसाइसली दो. यस, दे आर कनकेव. ओवल. ये कौन ओवल बोल रहा है? डिस्क लाइक. हाँ, हु वाज ओवल? ये साथ था. जी मैम. यस मैम. They are convex, you are right. Disc like है, they are convex, they are biconvex. That means उनकी जो दोनों sides हैं, they are caved in. They are biconvex discs. They are right. They are not oval. Remember that. Don't make that mistake. So they are biconvex discs. So इसके अंदर जो biconvexity है, that is lost and it is replaced by, they become round. They become spheres. अब why do they become spheres? अब इन सारे cases में just keep this in mind, these are hereditary diseases. This is something which has been passed through inheritance. तो कोई शुरू का डिफेक्ट है. इसके अंदर जो डिफेक्ट है, that lies in your RBC's cell membrane, and due to its abnormal shape, because a sphere is an abnormal shape for an RBC, उससे क्या होता है, जो RBC है, it becomes more vulnerable, ज़्यादा नाजुक हो जाता है. It is not easily compressible. It is not easily able to mold its shape, क्योंकि जब वो स्प्लीन के साइनोसॉइड्स के थ्रू पास करता है, जो नॉर्मल शेप्ड है उसकी शेप ऐसी है, it is able to mold through those साइनोसॉइडल ओपनिंग्स. अगर जो स्फेयर है वो ज़्यादा रिजिड हो जाता है, उसकी शेप वो नहीं होती है, तो जब वो साइनोसॉइड्स के थ्रू इट ट्राइज टू पास थ्रू दिस साइनोसॉइड्स, वो रप्चर कर जाता है, इट ब्रेक्स डाउन. सो
जो शेप है वो उसकी सबसे बड़ी, दैट इज द बिगेस्ट हैंडीकैप फॉर द आरबीसी इन दिस केस. और ये शेप क्यों खराब होती है? इट इज ड्यू टू डिफेक्टिव प्रोटीन्स विच मेक अप द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसी. और इनमें जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं, दे आर स्पेक्ट्रिन, एनकारिन एंड प्रोटीन 4.1. These are those proteins which are defective, and due to their defect the cell membrane of the RBC, it is not formed normally. और उसकी वजह से उसकी shape, strength, flexibility, उसकी molding power, all of those things are compromised or they have become abnormal. Start with the clinical features थोड़ा सा. इसके अंदर quickly asymptomatic to severe anemias, और इसमें डिफरेंट एपिसोड्स होते हैं. देयर इज हेमोलिटिक क्राइसिस एंड एप्लास्टिक क्राइसिस. इट इज नॉट ऑलवेज कि ये हो रहे हों, बट दीज आर थिंग्स, दीज आर एपिसोड्स व्हिच कैन अकर एनी टाइम इन दीज पेशेंट्स. हेमोलिटिक में देयर इज एन एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज. एक्सेसिव ब्रेकडाउन की वजह से व्हाट हैपेंस, हेमोलिसिस हो रही है, हीमोग्लोबिन इज कमिंग आउट, हीमोग्लोबिन इज बीइंग डिग्रेडेड, जिसकी वजह से बिलीरुबिन बन रहा है, बिलीरुबिन की वजह से देयर इज जॉन्डिस. और ये सारी जो डिस्ट्रक्शन है, द ग्रेवयार्ड, दैट इज द स्प्लीन. The spleen is burdened with this work. It is overworking. So, adaptive process, spleen enlarge कर जाती है. And anemia is obviously there क्योंकि hemolysis हो रही है. Aplastic में क्या होता है? When this stage comes या this episode is occurring, what happens? Bone marrow totally function करना छोड़ देता है. It completely stops functioning. So ये जो disease है, it can go into remission form, it can go into hemolytic crisis, it can go into aplastic crisis. You have to see, और इसको manage करने के लिए, intervene करने के लिए, you have to see what sort of a condition the patient is in. It's because it's a hereditary disease, it's a very tragic thing. We do not have some definite treatment for it. We just give them symptomatic treatment. If there is very severe anemia, patient is in hemolytic crisis, we give them blood transfusion. Otherwise, it is just symptomatic treatment. We can't do anything about it because the defect is something which is genetic, it is something which is inborn. So we just have, for this disease, the only thing is management of the disease. Investigations, अगर आप देख लो, obviously blood में you're going to find spherocytes and reticulocytes. Reticulocytes क्यों? क्योंकि generally when a patient is not in aplastic crisis, bone marrow is hyperactive. It is trying to produce more RBCs. Or the initial phase of an RBC is a reticulocyte. So you will find a lot of reticulocytes in the blood. Serum bilirubin will be raised. Urinary bilirubin is going to be raised. Why? Because of the hemolysis, because of the breakdown of the RBCs. Then there's a osmotic fragility test. Yes, we do them. This is a test where we use hypotonic solutions and we put a control, a normal RBC and a spherocyte in it. Obviously, because it is hypotonic, उसमें fluid का, water का level ज़्यादा है, जो आपके cells हैं, they will start absorbing that water, they will start swelling up. Till a time they will burst. इस टेस्ट में फिर क्या करते हैं, हम टाइम पीरियड देखते हैं कि कितना टाइम लेता है फॉर एन आरबीसी टू बर्स्ट. इसके साथ कंट्रोल, नॉर्मल आरबीसी, नॉर्मल आदमी का आरबीसी इज यूज्ड एज अ कंट्रोल एंड वी देन कंपेयर द टाइम. स्फेरोसाइट्स, दे विल बर्स्ट much more earlier as compared to a normal RBC. So this is one of those tests जो yes we do them. Management I've told you. Sickle cell को अगर if you look at sickle cell, इसके अंदर अच्छा मुझे बताओ what is a sickle? सिकल उर्दू में सिकल को सिकल क्या कहेंगे? दरांती मैम. दरांती यार मैं तुम लोगों को बता चुकी हूँ. या you've looked at. Good. Daranti. And you know the shape of the Daranti. It is like a crescent. हलाल की तरह, जो चांद होता है उसकी तरह होता है. अब इसके अंदर what happens? Again, an inherited disease. इसमें the structure of the hemoglobin that is defective. That is abnormal. और जो हीमोग्लोबिन इसके अंदर होता है इसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन एस. दिस इज एन एबनॉर्मल टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन. दिस इज अ हीमोग्लोबिन
which is not normal, इसकी जो capabilities है, they can never match up to the normal hemoglobin. So this is a structurally abnormal hemoglobin, और इस hemoglobin को हम categorize करते हैं as hemoglobin S. अब the thing is कि ये जो RBCs जिनके अंदर hemoglobin S होता है, whenever they are exposed to a condition where the oxygen tension is decreased, or there is a condition where there is dehydration, ये जो hemoglobin है, it crystallizes and it turns into a सिकल फॉर्म में आ जाता है. अब आपकी बड़ी क्लासिकल, अभी ऑब्वियसली ये जो लोग हैं, दे कैन नॉट गो टू प्लेसेस विच आर एट अ हाई एल्टीट्यूड. व्हाई? क्योंकि वहाँ डीऑक्सीजनेशन होगी, ऑक्सीजन टेंशन कम होगी. सो ये आपके जिस तरह हमारे नदन एरियाज हैं, दे कैन नॉट गो टू दोज हाई एल्टीट्यूड्स बिकॉज देयर द ऑक्सीजन टेंशन इज लेस. इधर इनको इमीडिएटली दे विल स्टार्ट हैविंग प्रॉब्लम्स. So they have to look. इनको एनेस्थीसिया देने में भी we have to be very very careful, क्योंकि एनेस्थीसिया में भी जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो कई दफ़ा हम बहुत ज़्यादा कम करते हैं. So इसके अंदर जो इसकी जो स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटी और ये जो क्रिस्टलाइज करता है, ये डिहाइड्रेशन में, और ये वो कंडीशंस जिनमें ऑक्सीजन टेंशन कम हो. तो ऑक्सीजन टेंशन हमारी वैसे भी नॉर्मल कंडीशन में भी फ्लक्चुएट थोड़ी बहुत करती है. तो यू विल फाइंड hemoglobin S in all these patients, और जाहिर बात है it is not a normal hemoglobin because it is not a normal RBC, it is more vulnerable to destruction. तो जब ये अगेन स्प्लीन के साइनोसॉइड्स के थ्रू पास करता है, ये ब्रेक कर जाता है and that leads to hemolysis and ultimately anemia. If you look at the pathogenesis, there is substitution of valine amino acid for glutamine. So valine is substituted with glutamine amino acid at the 6th position of the beta chain of the hemoglobin. Now you know hemoglobin is made up of alpha and beta chains. So in the 6th position of the beta chain, there is a substitution of the amino acids, and just look, one substitution of an amino acid, it causes such a big problem. Now obviously अब आप इसको देखोगे, अनीमिया हो रहा है. अनीमिया की वजह से बॉडी का सबसे पहला अडेप्टिव प्रोसेस क्या होगा? योर बोन मैरो, इट विल बिकम हाइपरसेलुलर. इट विल ट्राई टू प्रोड्यूस मोर आरबीसीज टू कॉम्पनसेट फॉर दैट अनीमिया. और जब वो हाइपरसेलुलर होगा, व्हाट इज हैपनिंग? अनीमिया इज देयर, अनीमिया इज परसिस्टेंट, इट इज अ डिजीज व्हिच इज नॉट गोइंग अवे. तो आपकी जो बोन मैरो कैविटी है, हम पहले भी देख चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, इट विल ब्रॉडन. तो आपकी जो मैरो कैविटीज हैं, दे विल एक्सपैंड. और इस कंडीशन को जब स्पेशली ये स्कल एरिया में उसमें हो, स्कल में स्पेशली जब हो, तो हम इसको कहते हैं बॉसिंग. स्कल जो है ना वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि आपकी अंदर से बोन मैरो कैविटी जो है ना, इट इज एक्सपैंडिंग. इसी तरह आप लॉन्ग बोन्स वगैरह में देखो, तो और मेलर बोन्स में देखो, टीथ वगैरह देखो, दे बिकम प्रोट्यूबरेंट बिकॉज जो आपकी मेन बोन्स हैं, जो प्लेट वाली बोन्स हैं, दे आर एक्सपैंडिंग. उनकी बोन मैरो कैविटी जो है वो हाइपरसेलुलरिटी की वजह से इट हैज वाइडेंड. देन इस अनीमिया के साथ देयर इज वन वेरी बिग प्रॉब्लम, दैट इज दी सिकल सेल्स. दे हैव गॉट एन एबनॉर्मल चार्ज ओवर देम. और ये जो चार्ज है, व्हाट इट डज, ये इनकी एडहेरेंस, इट इंक्रीजेस देयर adherence, and due to that these cells they stick to the endothelial lining, and when they start sticking there, क्या करेंगे? They will start occluding the blood flow because they will just act like a plague. तो इनके साथ very big problem is they have got an abnormal, ये charge होता है, and this increases that adherence and they start sticking to the endothelial walls, जिसकी वजह से this cause obstruction. Due to this, there is a condition known as autosplenectomy which occurs. और ये क्या होता है? इसके अंदर your spleen, it literally dies off. It is fibrosed, shrunken, and it dies off. Why? क्योंकि all of ये, I mean, you know, this is the graveyard. जितना RBC है, everything is passing through the spleen. Now this is abnormal RBCs. What they are doing, they will start sticking to the blood vessels
to the small branches, जो जितना भी आपका it's a vascular structure, सारी blood vessels के साथ it will start sticking to those blood vessels and it will cause obstruction. तो जब obstruction होगी तो क्या होगा, spleen में infarcts create होना शुरू हो जाएंगे, and as time passes there will come a time when the spleen will, a whole of the spleen will be infarcted, and when that happens the spleen will become shrunken and it will become fibrotic. So basically the spleen has finished, it has died off. It is kind of like the body has taken out the spleen and thrown it away. This is known as autosplenectomy. The body has removed the spleen. You get my point? So I mean इस हिसाब से again this is a, इसका ये एक बहुत बड़ा, this is a very big drawback because it destroys the spleen. Condition, obviously it is an inherited condition. ये obviously you're going to find it in children, क्योंकि these children they are going to be anemic, they can be jaundiced, and again due to that property, that sticking property, look at the clinical features. Obviously anemia is going to be there because there is going to be hemolysis. The other problem is tissue infarct. Due to this inherent property, these cells they start blocking the blood vessels, and जिस blood vessel को block करेंगे उस area का जो tissue है ultimately उसकी infarction होना शुरू हो जाएगी. So what you will see, I mean आपको सारे sign symptoms of anemia, fatigue है, increased susceptibility to infection, leg ulcers, because ये leg ulcer और ये सब कुछ क्यों बन रहे हैं, due to that adhesive property, because जब blood flow will decrease that tissue will get damaged, और जब tissue is going to get damaged there is going to be injury, there is going to be inflammation, there is going to be ulcer formation. और leg ulcers इसलिए क्योंकि जब blood vessels which are superficial blood vessels which are immediately present under the skin, इनकी जब blockage होगी, इनकी होगी, तो immediately the surrounding skin और जो आपकी बाहर की स्किन है that is going to be affected. तो ये आपको उन जगहों पे अल्सर्स जो है ये नजर आना शुरू हो जाएंगे. Then bossing of the skull due to hyperactivity of the bone marrow, excessive cells are being produced जिसकी वजह से जो skull है that will enlarge in size. Infarction, yes, you are going to see, और इसमें yes there are going to be episodes of severe pain, because when the blood vessel is going to be blocked and there is going to be infarction at that time, yes, severe pain, especially where bones and spleen are concerned. Bones and spleen, they are the main organs which are affected by infarction. मगर बाकी yes, बाकी जगहों पे भी बिल्कुल you will find infarction, you can find infarction, but the first organs to suffer from infarction are the bones, because यहाँ आपकी blood supply है, इसके through यहाँ आपका bone marrow है, इधर आपके blood cells बन रहे हैं, they have become hypercellular, they have become hyperactive. Spleen is the place जिसके through आपके सारे RBCs they are filtering through it. तो ये वो organs हैं जो सबसे पहले इस चीज़ पे affect आपके होंगे. So bone pain, yes, you will definitely find, और जिन बच्चों को वो initially infancy से they start developing this pain. They are involved with this pain. Painful swelling भी होगी, उनको वैसे भी दर्द होगी. तो this is something जो बिल्कुल शुरू से ही it starts. Spleen may be painful infarction as the blood vessels they are getting blocked. Yes, painful infarction होती है. Kidneys में obviously जब उसकी blood vessels they will start getting occluded and obstructed, आपकी वहाँ पेपिलरी नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी. जब वहाँ का जो टिश्यू डैमेज होगा तो यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाएगा. डिसेंट्री अगेन another very important place where you will find mesenteric infarction, and उसकी वजह से acute abdominal pain can occur. Chest pain, when this thing reaches your, it starts involving your pulmonary blood vessels, then you can experience chest pain. So just look at all these things. This anemia is something, I mean no anemia is good, but this anemia has more severity to it. It has more painful element to it. Now precipitating factors, look, there is dehydration, chilling, infections,
any oxygen tension variations, and pain. Look, pain is one of the dominant features which is associated with this anemia, और वो भी हो रहा है क्योंकि इन्फेक्शन का एलिमेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा है. इन्वेस्टिगेशंस अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपका हाई रेटिकुलोसाइट काउंट, क्योंकि आपके सेल्स जो हैं वो लॉट बोन मैरो इज हाइपर एक्टिव, और सिकल सेल एरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज आपको नजर आएंगे, क्लासिकल आपको इमीडिएटली नजर आएंगे. इसमें आप हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाओगे तो आपको इसमें हीमोग्लोबिन एस का बैंड नजर आ जाएगा. सो दैट इज डायग्नोस्टिक, and it is a very sad state of affair. We do not have any cure for this disease. Folic acid is something we have already studied. It is something which assists in the synthesis of DNA, with the hope that this will increase the production of RBCs. क्योंकि RBC की production के लिए you need a lot of DNA. Then अगर कोई इन्फेक्शन एसोसिएटेड है, यू ट्रीट दैट. इट्स जस्ट सिम्टोमेटिक. कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं, यू लुक इनटू इट. एक आदमी हाई एल्टीट्यूड पे रह रहा है, मरी में रह रहा है, वहाँ आप सिकल सेल आदमी को नहीं रखोगे. यू विल एडवाइज हिम टू मूव डाउन लोअर इनटू द प्लेन्स. Or when there is some sort of a hemolytic crisis, a lot of breakdown of RBCs is taking place, then you have to give them blood transfusion. So this is something, इसमें भी again there is symptomatic treatment. You can't do anything about it. You just have to see how the patient is doing, and you just have to manage that patient. और एक सिकल सेल ट्रेट होता है, this is जिसके अंदर आप you have normal hemoglobin, और इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन एस की क्वांटिटी है दैट इज लेस देन 40% ऑफ द नॉर्मल हीमोग्लोबिन. सो अनलेस एंड अनटिल इस आदमी को आप बहुत सिवियर एनॉक्सिक कंडीशंस को एक्सपोज ना करो, दीज पीपल कैन लीव अ वेरी नॉर्मल हेल्दी लाइफ. दे डोंट हैव, तो इस कंडीशन को हम सिकल सेल ट्रेट कहते हैं. सो अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ज़्यादा एनॉक्सिक कंडीशंस ना डेवलप करो इस पेशेंट के लिए, दिस पेशेंट can lead a very normal healthy life. Rest of the 60% plus hemoglobin is enough कि वो normally वो करें. Thalassemia is very common disease in Pakistan, and again इसके अंदर hemoglobin synthesis इसके अंदर problem आ जाती है. इसके अंदर जो globin chains हैं those are affected. Now thalassemias can be of alpha type and beta type, क्योंकि two type of chains आते हैं, alpha chains and beta chains, 2 alpha chains, 2 beta chains. So there can be alpha thalassemia, there can be beta thalassemia, but beta thalassemias are more common. इसीलिए अक्सर हम जब thalassemia का word use करते हैं, usually we are referring to it as beta thalassemia. यहाँ आपके पास कुछ terms आएंगी, homozygote और heterozygote. Homozygote is where both the genes are identical, and heterozygote is where one gene is different from the other. So heterozygote में तो there is no problem. It is a simple thing. One gene is normal, the other gene is defective. That condition is known as a heterozygote condition. But where homozygote is concerned, इधर आपको देखना पड़ता है, is it a normal homozygote or it is an abnormal homozygote? क्योंकि जो normal homozygote है, that means both genes which are contributed, they are identical. क्योंकि homozygote का मतलब होता है identical genes. So those homozygote identical genes, if both the genes are normal, we say this is a normal homozygote. If if both the genes are defective, technically by definition, if you look at those genes, they are identical. In what way? Both are defective in the same way. So agar by definition देखो, those are homozygote genes, although both are defective identically. तो उसके आगे आप लगा दोगे abnormal homozygote. That means both genes are defective. They are identical, but they are defective. So normal homozygote means normal, both genes are normal. Abnormal homozygote means both genes are abnormal. अब इसमें अगर if we look at it, in heterozygote, if one gene is normal and the other gene is thalassemic, it is abnormal. वो जो condition होगी, that is known as beta thalassemia minor. And usually a person who has thalassemia minor
they can maintain their hemoglobin, इनका रहता है around 9-10 के करीब, ये they can maintain it and they can lead a very healthy life. They do not have any problems unless and until there is some sort of a condition जिसकी वजह से they become more anemic or there is some infection or something. मगर usually they are absolutely normal. They do not have any problems. Problem comes when there is an abnormal homozygote beta chain. That means that both the beta chains they are defective. फिर क्या होता है? Then there is thalassemia major. अब इसमें होता क्या है? What happens? Now both the beta chains are abnormal, alpha chains are normal. तो इसमें क्या है कि alpha chains they combine with your beta chains to form hemoglobin. So alpha chains are normal. If they can find any normal beta chain, that alpha chain combines with that beta chain. But obviously beta chains तो इतनी होंगी नहीं, they are not going to be there. So what happens? These alpha chains they start combining with gamma chains. अब gamma chains जो हैं they are not chains of adult lifehood. Basically gamma chains जो हैं these are present in hemoglobin F, which is fetal hemoglobin. When a baby is in fetal form, तो जो उसका hemoglobin है, it is formed by alpha chains and gamma chains. And when that child is born, gradually those gamma chains they are converted to beta chains. मगर क्योंकि यहाँ beta chains are defective, तो क्या होता है जो थोड़ी बहुत बीटा चेन्स मिलती हैं, अल्फा चेन combines with those few available बीटा चेन्स और उसके बाद वो क्या करता है, वो गैमा चेन्स के साथ कंबाइन करने लग जाता है, which are technically not R chains, which are not part of the adult hemoglobin. They are part of the fetal hemoglobin F. So इसमें फिर क्या होता है, और ऑब्वियसली गैमा चेन्स की भी एक लिमिट है. देन द अल्फा चेन्स, उनमें से कुछ जो है विच कैन नॉट फाइंड एनी कॉम्बिनेशन, दे रिमेन एज फ्री अल्फा चेन्स, दे आर जस्ट प्रेजेंट. एंड व्हाट, ये जो फ्री अल्फा चेन्स हैं दे स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग इन दीज आरबीसीज, और ये फर्दर इन आरबीसीज को, इसकी मेम्ब्रेन्स को डैमेज करते हैं, दे मेक इट मोर ससेप्टेबल फॉर हिमोलिसिस. सो दिस इज द प्रॉब्लम जो आपकी बेसिकली इसमें होती है. तो दैट इज वाई डिपेंडिंग ऑन द सिवेरिटी ऑफ द थैलेसीमिया हम इसको इन बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, बिकॉज बीटा चेन्स आर नॉट बीइंग प्रोड्यूस्ड नॉर्मली. अब लेट्स हैव अ लुक what exactly happens. Thalassemic patients they are usually diagnosed by 1 or 2 years, chote, because you will see growth retardation in these children, repeated infections hongi, anemia obviously due to hemolysis you are going to see, bone marrow hyperplasia क्योंकि bone marrow is trying to produce more RBCs, hepatosplenomegaly due to their role. अब मेन चीज आपकी इन्वेस्टिगेशंस, इसमें जो आपको नजर आएगा देयर इज गोइंग टू बी सिवियर माइक्रोसिटिक hypochronic anemia. That means the size of the RBC is going to be very small and the hemoglobin content within that RBC is going to be less than normal. Reticulocytes, obviously their count is going to be increased because more RBCs are being produced. Serum ferritin levels and serum and iron binding capacity is going to be saturated. Serum ferritin is going to be high. Stores are going to be very, very high because they are not being utilized. वो वहाँ connect होते जा रहे हैं. So serum ferritin के levels जो है they will increase because serum ferritin is not being used. Diagnostic इसमें क्या है? Again hemoglobin electrophoresis. You look at the hemoglobin bands. अब there are two types of technically hemoglobins in a normal person. There is going to be hemoglobin A adult type and there is going to be hemoglobin F fetal type. Normally in a normal person usually hemoglobin A, hemoglobin adult type is roughly around 98 to 99% and hardly 0 to 1, maybe
if you extend it 2% तक, there is fetal hemoglobin. That is the normal picture. मगर thalassaemic patients में जो hemoglobin F का band है, that will widen, that will increase. Hemoglobin F will be, you will see a big band of hemoglobin F. That is diagnostic. अगर 1 to 2% से ज़्यादा hemoglobin F आना शुरू हो जाए, that becomes diagnostic of thalassemia major. इसके अलावा आपको bossing of the bones, hypercellularity की वजह से नजर आएगी. Again, इसके अंदर जो आपकी वो है, that is transfusion. इन सम केसेस स्प्लीनेक्टमी भी हम करते हैं. वाई? एक तो स्प्लीन साइज इंक्रीजेस और वो कई दफ़ा इतना ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है कि फिजिकली उसकी इट बिकम्स हैवी एंड इट स्टार्ट्स कंप्रेसिंग द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स. दूसरी द थिंग इज वी टेक आउट द स्प्लीन बिकॉज द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड. दैट इज द स्प्लीन. तो व्हेन यू टेक आउट दिस स्प्लीन, लाइफ स्पैन ऑफ द आरबीसीज ये आपका इंक्रीज कर जाता है. और इन एक्सट्रीम केसेस बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी होती है. अब thalassemia minor, usually no problems. Asymptomatic होते हैं, they can lead a very normal life. Now alpha thalassemias, इसमें what we see, there are 4 alpha genes. I'm not talking about the chains. Now I'm talking about the gene. In chains के ऊपर there are 4 alpha genes. If one is defective or absent, the other 3 genes can take over, no problem. There are no signs, symptoms, the patient does not feel anything. We do not have any complications. If 2 genes are defected or they are deleted, then that patient will suffer from mild hypochromic anemia. Again, something we can compensate. But if 3 genes are deleted, then the patient will have a disease which we know, which is known as hemoglobin H disease. Now this hemoglobin H, this is an absolutely useless hemoglobin. It is absolutely useless. It has no capability. It has no oxygen carrying capacity. It is functionally totally useless. Now in these cases you will find moderate anemias and splenomegaly, and the treatment for this is exactly the same as you would do for thalassemia major cases. And if all the 4 genes are not there, they are deleted, they are absent, they are totally defective, the baby will be a stillborn baby. That baby cannot survive. In this condition, we call this condition hydrops fetalis. I mean, the baby is going to be, it's going to be a dead baby. That baby cannot survive. So these are the things. And again, अब आप इधर देखो, you will never give them iron therapy. So that is why serum iron and serum serum ferritin are so important. Baki acquired hemolytic anemias, I'll just go through them. Acquired something which is due to, when you acquire them, it is a secondary thing. The etiology can be somewhere else. Etiology can be an immune destruction of RBCs. We've already seen, like in certain conditions we have studied. They can be non-immune conditions, like in some liver pathologies, in some kidney pathologies. There can be a lot of systemic pathologies which can lead to destruction of the RBCs and anemias. Then miscellaneous, like malaria, because malaria, it resides in the RBCs, so it can cause its hemolysis. Burns, there is destruction of the RBCs. So these are conditions which are acquired. This, the anemia is secondary to some other primary cause. Autoimmune hemolytic anemias, this is again something you commonly see them, and again this is an autoimmune disease. In this, auto antibodies are formed against your own RBCs and they destroy their own RBCs. So this is an autoimmune disease, and for this disease we do a special test which is known as Coombs test. In Coombs test, we identify the autoantibodies which are produced against our own RBCs. You just have to know this. This is just the basic thing which we do in the lab. And there are 2 types of Coombs test. There is a warm Coombs test and there is a cold Coombs test. It is seen that certain antibodies, they bind with the RBCs better at normal body temperatures, and it is also seen there are certain autoantibodies which are formed against our own RBCs, but they bind better with the RBCs under
lower temperatures which are less than the body temperature. So based on their binding capacity, this Coombe test has been labeled as a warm Coombe test and as a cold Coombe test. But basically the Coombe test is the I was just connected just now, na? Did we miss something? आवाज आवाज आ रही है आपको? You can hear me? जी जी मैम। Okay, you didn't miss anything ना? मैं I think अभी मेरे signals drop हुए थे. Okay, बस I'll just finish it off. Non-immune hemolytic anemias. सवाल है, okay. Any traumas, malarias, drugs, any transfusion incompatibility, any reactions, bacteremias. There can be a lot of causes. There are a lot of secondary causes which can lead towards hemolysis of your RBCs. So for non-immune hemolytic anemias, the list is endless. Anything which leads towards hemolysis of the RBCs, which is secondary to some other primary cause. So this was about this section. Rest we'll study next time. Now, any questions regarding this? कोई चीज जो आपको समझ ना आई हो? मैम, स्प्लीन रिमूव करने से आरबीसीज की लाइफ स्पेन किससे ज्यादा होती है? देखो, द थिंग इज एवरीथिंग जो भी आपकी आरबीसी की डिस्ट्रक्शन है दैट इज अकरिंग इन द स्प्लीन. स्प्लीन इज द मेन ग्रेवयार्ड फॉर द आरबीसीज. ओके, नाउ द थिंग इज जब इस किस्म की डिजीजेस हो रही हो, द थिंग इज कि जब ये एबनॉर्मल आरबीसीज दे पास थ्रू द स्प्लीन, दे आर इमीडिएटली डिस्ट्रॉयड. तो उनका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत छोटा रह जाता है. They are destroyed very very quickly. But if you remove the spleen, उससे ये होता है कि आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है इट डज नॉट बिकम नॉर्मल, क्योंकि इट इज ऑलरेडी एन एबनॉर्मल आरबीसी, बट स्टिल उसका जो सर्वाइवल टाइम है दैट इंक्रीजेस. सो देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ आरबीसी. जो हेमोलिसिस है वो रिलेटिवली थोड़ी कंट्रोल हो जाती है. जब आप हेमोलिसिस कंट्रोल करते हो देन यू कंट्रोल ऑल द अदर थिंग्स, बिकॉज विद हेमोलिसिस कम्स जॉन्डिस, विद hemolysis comes anemia, with hemolysis comes all those other factors which are associated with it. So the only purpose of removing the spleen is first, एक तो it increases in size. तो जब spleen increase करती है इसके pressure effects हैं and जो बहुत ज़्यादा enlarge कर दे, they have a very uncomfortable feeling for the patient. But the main thing is जब आप उसको remove करते हो you are increasing the lifespan of the RBC, because the destructive machine which was destroying those RBCs that has been removed. RBC आपका blood में destroy हो जाएगा ultimately, but और जल्दी हो जाएगा, अपनी नॉर्मल लाइफ स्पैन नहीं लीड करेगा, बट स्टिल वो जो इमीडिएटली डिस्ट्रॉय हो रहा था उसका लाइफ स्पैन फिर भी इट विल इंक्रीज समवॉट. तो आपका जो हेमोलिसिस का फैक्टर है वो आपका थोड़ा डिक्रीज हो जाता है. दैट इज ओनली पर्पस जिसके लिए स्प्लीन रिमूव करते हैं. ओके मैम. मैम, स्प्लीन रिमूव करने के बाद स्प्लीन की जो एक्चुअल फंक्शंस है वो फिर कौन परफॉर्म करेगा? आई मीन कौन टेक ओवर करेगा? टेक ओवर आपके ब्लड वेसल्स में आपका लिवर और ये आपके जो ओवरऑल है ये कॉम्पनसेट करते हैं. क्योंकि मगर द प्रॉब्लम इज ये जो हम बात कर रहे हैं इसमें ऑलरेडी आपका जो ब्लड है दैट इज डिफेक्टिव. सो ऑलरेडी द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज. मगर उसमें ये होता है कि जब स्प्लीन इज देयर, जो हेमोलिसिस का फैक्टर है दैट बिकम्स मोर रैपिड.
क्योंकि ऑलरेडी द डिस्ट्रक्टिव मशीन इज देयर। तो इसमें जब आप डिस्ट्रक्टिव मशीन जो उसको डिस्ट्रॉय कर रही है, जो आप जब निकाल देते हो, तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, आपका जो लिवर है, इन ऑर्गन्स में अल्टीमेटली योर आरबीसीज दे आर गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। बट द आइडिया इज कि जो हेमोलिसिस के फैक्टर है उस चीज को हम जितना कम relatively अगर हम स्लो डाउन कर सकें, बिकॉज वी कैन नॉट क्योर द डिजीज, टेक्निकली वी कैन नॉट ट्रीट द डिजीज, दीज आर जस्ट सिम्टोमैटिक मेजर्स दैट वी टेक कि हम इस चीज को मैनेज कर लें। द थिंग इज गोइंग टू बी देयर, वंस स्प्लीन निकल जाएगी, आपकी आरबीसीज का लाइफ स्पैन इट विल इंक्रीज समवॉट, but they are going to be destroyed. That anemia is still going to be there. It is just a management tactic just to कह लो contain the disease. मगर जब ये disease बढ़ती है या sometimes these patients they go into their hemolytic crisis or in their hemolytic phases, it can be a very very dangerous disease. उसके साथ then we have to transfuse और उसके साथ आपको corrective measures लेने पड़ते हैं। मगर the problem वही आ जाती है कि all we can do is we can give them symptomatic treatment, nothing else. This is a very tragic thing, but the problem is it is an inherited disease. So unless and until हम लोग gene therapy में we make those advances कि हम उसकी gene को किसी तरीके से we replace it with a healthy gene, unless and until till that stage comes, we just have to manage. And sometimes you आप थैलेसीमिक पेशेंट्स को अगर आप if you have a look, इनका majority का आप देखें सर्वाइवल इतना ज्यादा नहीं है। यस, ये भी बात नहीं कि बहुत जल्दी, कई लोग बड़ी देर तक भी सर्वाइव करते हैं, मगर इफ यू लुक एट दीज चिल्ड्रन, इफ यू लुक एट दीज, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डेथ्स व्हिच आर अकरिंग इन देयर टीन्स या 9-10 साल पे, या व्हेन दे आर अराउंड इन देयर टीन्स समथिंग। इनका लाइफ स्पैन भी इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि यस हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते जाते हैं, मगर द डिजीज इज देयर, इट कीप्स ऑन डिस्ट्रॉइंग द बॉडी, दैट इज द प्रॉब्लम। मगर स्टिल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अब व्हेन द स्प्लीन इज नॉट देयर, तो हम क्या चीज कर रहे हैं, हम जो डिस्ट्रक्शन आपकी ब्लड वेसल्स में हो रही है, द ब्लड विच इज कलेक्टिंग ऑल दोज debris, all those damaged RBCs, what do we do after a week, depending on the severity, after a week, after 2 weeks, after a month, depending, we take out all that blood and we transfuse it with brand new blood जिसके अंदर बिल्कुल healthy RBCs होते हैं। till the time वो RBCs सारे जो हैं they are destroyed by that body, again we give them a fresh lot, again we give them a fresh lot. So हम एक्सटर्नली जो हम मैनेजमेंट हमने वैसे साथ साथ करें, इवन जब हमने इंटरनली भी स्प्लीन वगैरह निकाल दी, व्हाट वी आर डूइंग इज एक्सटर्नली वी आर मैनेजिंग इट, जो उसका ब्लड विच इज बीइंग डिस्ट्रॉयड हम एक्सटर्नली उसको कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज अ प्रॉब्लम इन लोगों के साथ, इट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। दीज आर बेसिकली सिक पीपल, इफ दे आर इन रिमिशन फॉर्म्स दे आर कंफर्टेबल, बट जब रिमिशन फॉर्म में ना हो, they might be all right, मगर the anemia is so severe, इनका उसके पे sign symptoms इतने हो जाते हैं कि sometimes they can't move around like that. So this is a disease which does not have a definite treatment. These are diseases which do not have proper cures. So ये problem definitely इनमें है। Any more questions? आपको समझ आ गई है, you have got the concept of homozygote and heterozygote and basically homozygote. Please हमेशा देखना, is it an abnormal homozygote or is it an abnormal homozygote? Because I don't know, कई दफ़ा गलती ये कर जाते हैं कि when we use the word heterozygote, immediately दिमाग में चीज आती है it must be a pathology, and whenever the word homozygote is used, it is नहीं, this is something which is used for normal conditions. इस चीज से ये जो fallacy है, just be careful about it. If a word homozygote is used, just see is it a normal homozygote or an abnormal homozygote. इसमें कई दफा आदमी जो है you can make a mistake. So these are small mistakes जो हो जाती हैं. Just be careful when you are using these terms, when someone is using these terms for you. Now you understand why
investigation is necessary. Now you understand why in anemias, especially where iron concentrations and iron levels are concerned, why they become so important. Because in these patients, if you are going to give them iron, there is going to be iron toxicity. और already एक patient जो इतना बीमार है, you are going to aggravate their condition. So that is a very important clinical significance why we check iron levels whenever we want to start iron therapy. Even if you are certain a person has iron deficiency, please confirm. Anything else? Any more questions? Your concept is clear now. Inherited anemias, any question, any doubts, anything which comes to mind, any confusion? Okay then. Okay, Priya, then I'll end the session. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you.